Good morning, students. In the earlier lecture, we discussed about the concept of disability and disorder, the meaning of disability and disorder. Today, we will talk about the types of disability. There are three main types of disability, that is cognitive, intellectual or learning disability, and physical disability. Cognitive disability, as we earlier discussed, is a neurological disorder or obstruction for an individual to store, process, and produce information. This ability can affect the capacity to read, write, and speak. When you don't, when you can't present yourself, when you can't present your thoughts, then you have cognitive disability. Cognitive disability can be of three types: memory disorder, hyperactivity, and dyslexia. Memory disorder means you can't recall the words, you can't recall what you saw earlier, sometime before. Difficulty in remembering something that you heard, that you said, that you saw before some time. कुछ देर पहले कही गई बात, देखी गई बात या सुनी गई बात भी आपको याद ना रहना, दैट इज़ योर memory disorder. The second type is hyperactivity. Hyperactivity means a person finds it difficult to stay at one place. किसी भी एक काम को करने में जब उसका मन ना लगे, और दूसरे काम की तरफ भागे, तो दैट इज कॉल्ड हाइपर एक्टिविटी. थर्ड इज डिसलेक्सिया. डिसलेक्सिया मीन्स a person have difficulty in writing, reading and speaking. So these are the three types of cognitive disability. The second type of disability is intellectual disability or learning disability. It refers to the reduced capacity of a person to learn task and process information. Means एक पर्सन को कोई भी काम याद करना या उसके रिगार्डिंग आपके माइंड में इंफॉर्मेशन का प्रोसेस होना वो ना हो, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को करेक्टराइज किया जाता है जब एक पर्सन का आईक्यू बिलो 70 आ जाए. एक नॉर्मल पर्सन का आईक्यू अबव 85 होता है, तो बिलो 70 आ जाए तो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. Learning difficulties can cause difficulties in reading, writing or mathematics. So this is the second type of disability. The third type is physical disability. Physical disability means that affect a person mobility. Mobility means गतिशीलता, you can say that. एक पर्सन की स्पीड पे जो इफ़ेक्ट डाले, किसी भी काम करने की स्पीड पे जो इफ़ेक्ट डाले, दैट इज़ फिजिकल डिसेबिलिटी. दैट पर्सन में नीड टू यूज़ सम सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर असिस्टेंट विद मोबिलिटी. अपनी गति को बढ़ाने के लिए उसे जब किसी इक्विपमेंट्स जैसे व्हील चेयर है उसका यूज़ करना पड़े, सो उनकी ज़रूरत होती है ऐसे फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन को. So physical disability also can be of three types. The first is locomotor disability. Locomotor disability, that
belong that can be of your bones, joints, muscles. So इनकी जो डिसेबिलिटी होती है दैट इंक्लूड्स योर लोकोमोटर एबिलिटी. सेकंड इज विजुअल इम्पेयरमेंट, आपकी ब्लाइंडनेस या लो विजन, दैट कम्स अंडर विजुअल इम्पेयरमेंट. लास्ट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट, दैट इंक्लूड्स deaf person. So this is the types of disability. So I think the all three types are clear to everyone. Thank you very much.